हेलो एवरीवन। सो जैसे आप देख रहे हैं मैं अपने व्लॉग में फिर से आ गई हूँ और बिलीव मी ये व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ कि मैंने अपने पहले व्लॉग में विच इज़ अ वेरी सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल ब्लॉग वेयर आई हैव शोन कि आप कैसे पार्टी मेकअप कर सकते हैं विच इज़ अ लाइट पार्टी मेकअप एंड उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको एक बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर व्लॉग उसका बनाऊंगी। तो लीजिए मैं यहाँ आ गई हूँ और मैंने आज अपना ये व्लॉग भी बना दिया है एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आगे चलिए और देखिए कि मैंने कैसे अपना ये मेकअप लुक किया है। प्रोडक्ट मैं लेने वाली हूँ सबसे पहले वो है मॉइस्चराइज़र और आपको लेना है सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र। अब आपको लेना है इंस्टा ब्लर विच इज़ फ्रॉम बॉडी शॉप एंड दिस इज़ अ प्राइमर विच यू हैव टू अप्लाई ऑन योर एंटायर फेस। Wherever you find a pores, it will make the pores even. और अब आप यूज़ कर सकते हैं कवरेज के लिए विच इज़ फिट मी का एंड द शेड नंबर इज़ 20 सैंड शेड एंड दिस इज़ बेसिकली अ कंसीलर एंड आपको ये कंसीलर आप बहुत वेज में लगा सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा वे बताती हूँ लगाने का। और आपको ऐसे ट्रायंगल बनाना है। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑलवेज that whenever you are applying this concealer it should be always like this so that आपका फेस जो है वो हमेशा ऐसे रहेगा। Now I'm going to use Superstay Maybelline foundation and the shade number of this foundation is 220 which is natural beige. Since they have given the pump so you need to just apply a dot and this dot you can spread it like this. So you need to blend nicely so that this foundation goes into your skin and it will not look like you are painted or patchy or something because it's a very basic simple technique of blending. So everybody should know how to blend your foundation in your skin. Actually your skin should accept the foundation. So this is the basic funda and every foundation is different. So right now I'm using the liquid foundation which tends to dry more quickly. So after this foundation I'm going to take the eyes and since it's a very simple and basic makeup I'm not going to make it over. So मैं ले रही हूँ Tanmix का which is again a Revolution Kit eyeshadow and I'm going to take this pink color, basically this pink,
And now the same color on your other eye. And after this color, I'm going to take this color, which is dark pink color. Now you can take any dark color. So right now I'm going to take this black color. Now with fingertip only you can take any soft pink color. So I'm going to take again this pink color, and with finger you just can tap it. So the same thing you need to do other side as well. So again I'm going to take this pink color. And now again with the fingers, I'm just going to dab this color.
After putting the color in your inner corners of the eyes, now with different brush, which is again a flat brush, you can just spread the color like this. And now after this you can put kajal. And just fill half. So now I'm taking the eyeliner, which is from Glam 21. So you can see that now I have created these eyes, and now whatever on face you feel like it's extra, you just remove it. And now I'm going to choose for contouring palette, and I'm going to take this brown color. So this is MAC Moon. So with this I'm going to take this brown color and just going to create a very so just blend it nicely. So now I'm taking Maybelline blush, which is this palette, and this is very useful palette. It will work with every makeup. And so I'm going to take this color. So you need to just on the apple of your cheeks. So I have very prominent apple on my face, so I'm making sure I'm and after this, from the same, so after this I'm going to take this K. So basically this will help full in setting your makeup. So take any fluffy brush, and with the help of that you just need to so it will give you more cleaner. So after this I'm going to take this lip liner. You can take any lip liner of your choice.
After this, so now I'm going to apply lipstick after this liner, and this lipstick is MAC, and this color is Twig Satin, and this is very kind of nude color, and I like this color very much. And now I have to do my eyebrows. So brows I'm doing after all the makeup is finished, because सबका अपना एक तरीका होता है, एंड मेरा खुद का ये तरीका है. So now I am going to take this Inglot. So basically this is kind of powder form, and then this is brow liner gel AMC 20, and now I'm going to put on my brows. So you need to take a little bit of color. So now you can see that the brows are now well defined, and so this is my final look, and you can take this look by applying these all makeups. And ये एक नेचुरल मेकअप था, और आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो सारे आपको इजीली अवेलेबल हैं अमेज़ॉन, नाइका और कोई भी साइट पे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग विच इज़ कमिंग वेरी सून नाउ. और जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मेरा लुक है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, बिकॉज़ अब आगे क्या आने वाला है इवन मुझे भी नहीं पता है. तो इट विल बी सरप्राइज फॉर श्योर. इट विल नॉट बी अ मेकअप व्लॉग, एंड मैं थोड़ा सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट करने का, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे बेल ज़रूर बजा दीजिएगा.